नमस्कार। RS मैथिली चैनल में अपनेक स्वागत अछि। आइ हम सब वीडियो के अंतर्गत चर्चा करब शब्द प्रकरण। इससे पूर्वक वीडियो में हम सब वर्ण प्रकरण अर्थात वर्ण के परिचय देख चुकल छी। वर्ण के बाद अछि व्याकरणक सबसे महत्वपूर्ण अध्याय शब्द प्रकरण अर्थात शब्दक भेद या शब्दक परिचय। इहो बहुत महत्वपूर्ण अध्याय, छोट अध्याय अछि, लेकिन ओहिसँ नेट परीक्षा में एक नहीं तो दूटा क्वेश्चन अवश्य रहते अछि। JRF क्वालिफाई करबाक लेल बहुत अनिवार्य छै। एक एकटा प्रश्न अनिवार्य रहते अछि, महत्वपूर्ण रहते अछि JRF के लेल। ध्यान से देखिए वीडियो के। आइ देखो हम सब शब्द प्रकरण अर्थात शब्दक भेद, जैमें तत्सम तद्भव, देशद विदेशद, रूढ़ यौगिक योग रूढ़, ये शब्द सब पर चर्चा करब जे केकरा कहल जाइत अछि। यदि अपने RS मैथिली चैनल के सब्सक्राइब नहीं केने छी तो सब्सक्राइब कर ली। आ वीडियो नीक लगत हुए तो लाइक शेयर सेहो करी। तब हम चर्चा करै छी एहिमे शब्द प्रकरण। शब्द जे अछि कोनो भाषाक आधार होइत अछि। आ शब्दक आधार वाक होइत अछि। ताहिमे अछि शब्द दू वा दू से अधिक वर्ण वा ध्वनिक सार्थक मेल के शब्द कहल जाइत अछि। शब्द ककरा कहल जाइत अछि? भेल जे दू वा दू से अधिक वर्ण वा ध्वनिक सार्थक मेल। निरर्थक शब्द के व्याकरण में चर्चा नहीं कयल जाइत अछि, तेँ में सार्थक मेल रहत शब्दक या वर्णक, तब दे ओ शब्द कहब शब्द होइत अछि। जेना घर, घ आ दूटा वर्ण अछि, जाहिमें ओ सार्थक शब्द अर्थ होइके आबि रहल अछि, सार्थक अर्थ व्यक्त कऽ रहल अछि। तहिना भेल गाय, गाय में भेल गा का य, दूटा वर्ण अछि, एहिमे दुनू के सार्थक अर्थ आबि रहल अछि। रोटी, हिमालय, कमल इत्यादि आदि सब, ई सब की अछि? सार्थक शब्द। आ व्याकरण में जे अछि निरर्थक शब्द के चर्चा नहीं अछि, कोनो स्थान नहीं होइत अछि। तेँ जँ अगर सार्थक शब्द नहीं रहत तो ओ मेल, वर्णक सार्थक मेल नहीं रहत तो ओ शब्द नहीं हैत। तो शब्दक देखलहुँ हम सब उदाहरण में, जेना ई सब शब्द भऽ गेलै के सार्थक अर्थ व्यक्त भऽ रहल अछि। आगाँ हम सब देखब शब्दक भेद। शब्दक भेद तीन प्रकार से कयल गेल अछि। शब्दक उत्पत्तिक दृष्टि सँ, शब्दक रचना वा बनावट दृष्टि सँ, आ शब्दक रूपांतरक दृष्टि सँ। आ तीनू के शब्दक जे भेद अछि अलग अलग अछि, एहि पर चर्चा करब। पहिल अछि शब्दक उत्पत्तिक दृष्टि सँ शब्द के चारिटा भेद अछि। शब्दक उत्पत्तिक दृष्टि सँ शब्द के चारिटा भेद अछि। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। शब्दक उत्पत्तिक दृष्टि सँ, उत्पत्तिक दृष्टि सँ शब्द के चारिटा भेद अछि। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। देशज, विदेशज। एहिमे से नेट में पूछल जाइत अछि तत्सम शब्द ककरा कहै छियै, तद्भव ककरा कहै छियै। चारिटा ऑप्शन देल रहत जे कहत एहिमे देशज शब्द कोन अछि, या कोनो शब्द देल रहत कहै कोन शब्द देशज अछि, विदेशज अछि, तत्सम या तद्भव अछि। ताहिके छँटबाक रहैत अछि, टिक लगबाक रहैत अछि। ताहिके बाद भऽ गेल दोसर, शब्दक रचना वा बनावट दृष्टि सँ शब्द के तीन भेद अछि। शब्दक रचना वा बनावटक दृष्टि सँ शब्द के तीनटा भेद होइत अछि। एहिमे भऽ गेल रूढ़, यौगिक आ योग रूढ़। शब्दक रचना वा बनावटक दृष्टि सँ शब्द के तीनटा भेद अछि, रूढ़, यौगिक आ योग रूढ़। आ तेसर प्रकार भऽ गेल रूपांतरक दृष्टि सँ शब्द के दूटा भेद अछि, विकारी शब्द
आ अविकारी शब्द। रूपांतरण शब्द के रूप में जो परिवर्तन होइत अछि कारक, पुरुष, लिंग आदि के अनुसार, तो भऽ जाइत अछि विकारी शब्द आ अविकारी शब्द। जाहिमे परिवर्तन नहि होइत अछि तऽ भऽ जाइत अविकारी शब्द। एहि दुनू पर इहो पर चर्चा करब बाद में। पहिले अछि तत्सम शब्द। शब्दक उत्पत्तिक दृष्टिसँ 4टा भेद अछि, जाहिमे पहिल अछि तत्सम शब्द। तत्सम शब्द भेल जे मैथिलीमे संस्कृतक मूल शब्दक प्रयोग तत्सम शब्द होइत अछि। मैथिली के कोनो आनो भाषामे जे अगर संस्कृतके शब्द जे रहत, एक संस्कृत शब्दके हूबहू जे प्रयोग कयल जायत तऽ ओ तत्सम शब्द भऽ जाइत अछि। तहिना मैथिलियोमे जे कोनो संस्कृतक शब्द अछि, एहिके जे हूबहू जे संस्कृतक मूल रूप जे रहैत अछि एहिने जे प्रयोग कयल जाइत अछि तऽ ओ भऽ जाइत अछि तत्सम शब्द। कोनो शब्दक कोनो संस्कृतक जे हूबहू शब्द प्रयोग जे मैथिलीमे कयल जायत तऽ ओ शब्द भऽ जाइत अछि तत्सम शब्द। जेना फल, फल शब्दके प्रयोग कयल जाइत अछि। पुष्प, पृथ्वी, जगत, अग्नि ई शब्द भऽ जाइत अछि तत्सम शब्द। तऽ तत्सम शब्द भऽ गेल जे मैथिलीमे संस्कृतक मूल शब्द, संस्कृतक मूल शब्दक प्रयोग तत्सम होइत अछि। जेना फूल, पुष्प, पृथ्वी, जगत, अग्नि ई सब भऽ जाइत अछि तत्सम शब्द। अगिला अछि तद्भव शब्द। तद्भव शब्द जे अछि तत्सम शब्दक मैथिली परिवर्तित रूप तद्भव शब्द होइत अछि। तत्सम शब्दक मैथिली परिवर्तित रूप अर्थात संस्कृत शब्दक तत्सम माने होइत अछि संस्कृत शब्द, आ एहिके मैथिली परिवर्तित रूप जे भऽ जाइत अछि, एहिके रूपके बिगाड़ि कऽ जे प्रयोग कयल जाइत छै, विकृत रूप होइत अछि, एकरा हमसब तद्भव शब्द कहै छी। ओ तद्भव शब्द भऽ जाइत अछि। जेना उदाहरण देखब तत्सम शब्द की अछि आ एहिके तद्भव रूप केहन होइत अछि। जेना अग्नि तत्सम शब्द भऽ गेल अग्नि, एहिके तद्भव रूप भऽ जायत आगि। संस्कृतक शब्द भऽ जाइत अछि जल, आ एहिके मैथिलीमे परिवर्तित रूप लिखब तऽ भऽ जाइत अछि पानि। जलके संस्कृत भऽ जाइत अछि तत्सम शब्द भऽ जाइत अछि जल, आ तद्भव रूप भऽ जायत पानि। अहिना तत्सम शब्द भऽ जाइत अछि कुब्जा, ई संस्कृतक शब्द भेल, आ एहिके तद्भव रूप परिवर्तित कऽ के प्रयोग करब तऽ भऽ जायत कुबरा। अहिना तत्सम शब्द भऽ जायत कपूर, कर्पूर, आ एहिके तद्भव रूप परिवर्तित कऽ के प्रयोग करब मैथिलीमे तऽ भऽ जायत कपूर। एना नेत्र तत्सम शब्द भऽ जाइत अछि नेत्र, आ एहिके तद्भव रूपमे परिवर्तित कऽ के प्रयोग कयल जाइत अछि कोनो भाषामे चाहे मैथिलीएमे तऽ ओहिके भऽ जायत आँखि। तऽ हमसब देखलहुँ तत्सम आ तद्भव शब्द ककरा कहल जाइत अछि। तत्सम शब्द संस्कृतक शब्द भऽ जाइत अछि, आ एहिके अपन भाषाके अनुसार जे एहिके फेर रूपमे परिवर्तित कऽ के रूपके बिगाड़ि के प्रयोग कयल जाइत अछि तऽ ओ तद्भव शब्द भऽ जाइत अछि। अग्निके लेल आगि, जलके लेल पानि, कुब्जाके लेल कुबरा, कर्पूरके लेल कपूर, नेत्रके लेल आँखि, तऽ ओसब भऽ जाइत अछि तत्सम शब्दके परिवर्तित रूप या बिगड़ल रूप तद्भव शब्द। अगिला हमसब देखब देशज। देशज शब्द कोनो भाषा विशेषक मूल शब्द जे एहि भाषाक जनसमान द्वारा बोलचालमे प्रयोग होइत अछि से देशज शब्द होइत अछि। जनसमान द्वारा बोलचालमे ई जे प्रयोग कयल जाइत अछि से देशज शब्द भऽ जाइत अछि। देशज शब्दक उत्पत्ति कोनो प्रारंभिक समय को पता नहि रहैत अछि। ओहि भाषामे समान बोलचालमे मानव द्वारा जनसमान द्वारा एहि शब्दक प्रयोग कयल जाइत अछि,
आ ओ कोनो भाषाक मूल शब्द होइत अछि, विशेष आ मूल शब्द होइत अछि जे देशज शब्द होइत अछि। कोनो भाषाक विशेषक मूल शब्द, कोनो भाषा विशेषक जे अपन मूल शब्द अछि से देशज भऽ जाइत अछि। आ ओ नेट परीक्षामे कतेक बेर विशेष रूपसँ देशजे शब्दके पूछल जाइत अछि, जेना चिक्कस। चिक्कस शब्द कतेक बेर नेट परीक्षामे पूछल गेल अछि। चिक्कस की अछि? देशज शब्द। डिबिया, बुझियौ जे ठेठसँ ठेठ भाषा रहत, शब्द रहत तऽ भऽ जाइत अछि मैथिलीके लेल देशज शब्द। डिबिया, जकरा हमसब डिबरी कहै छी, मिट्टी तेल डालिके बथिया डालिके एकर प्रयोग कयल जाइत अछि लाइटके रूपमे। ओरपानी, ओरपानी जे अछि कोनो घरके छतपर से पानि जे गिरैवला रहै छै ताहिके ओरपानी कहल जाइत अछि। फुनगी, कोनो गाछक सबसँ ऊपरके जगह अछि, सबसँ पातर, ताहिके फुनगी कहल जाइत अछि। सबसँ अन्तिम गाछ, कोनो पेड़के या गाछके डाली शाखा रहैत अछि ताहिके सबसँ अन्तिम जगहके फुनगी कहल जाइत अछि। लोटा, लाठी, पगड़ी, ईसब अछि देशज शब्द। देशज शब्द नेटमे अधिकतर पूछल जाइत अछि। चिक्कस शब्द कतेको बेर नेट परीक्षामे पूछल गेल अछि। तऽ हमसब बुझि लेलहुँ देशज शब्द ककरा कहल जाइत अछि, जे कोनो भाषा विशेषक मूल शब्दके देशज कहल जाइत अछि, जे जनसमान द्वारा बोलचालमे प्रयोग कयल जाइत अछि से भऽ जाइत अछि देशज शब्द। देशज शब्दके उदाहरण भऽ गेल चिक्कस, डिबिया, ओरपानी, फुनगी, लोटा, लाठी, पगड़ी, ईसब भऽ जाइत अछि देशज शब्द। अगिला देखब हमसब विदेशज, विदेशज शब्द। भऽ गेल विदेशज शब्द, जाहि शब्दक जन्म विदेशमे भेल अछि से विदेशज शब्द होइत अछि। विदेशसँ भेल तात्पर्य जे कोनो विदेशी भाषाके शब्द प्रयोग करै छी हमसब अपन भाषामे तऽ ओ शब्द विदेशज शब्द भऽ जाइत अछि। जाहि शब्दक जन्म विदेशमे भेल रहैत अछि, जेना अंग्रेजीवला शब्दके प्रयोग करब पुर्तगाली, फारसी, अरबी, ईसब शब्द जे प्रयोग होइत अछि तऽ भऽ जाइत अछि विदेशज शब्द। जेना अंग्रेजीसँ किछु लेल गेल विदेशज शब्द अछि हॉस्पिटल, डॉक्टर, इसकुल, टेबुल, लालटेन, ई शब्द जे अछि जाहिमे इंग्लिश शब्दके प्रयोग कयल गेल अछि। जेना हॉस्पिटल इंग्लिश शब्द अछि, डॉक्टर इंग्लिश शब्द अछि, इसकुल, टेबल, लालटेन तऽ अंग्रेजी शब्दसँ लेल गेल विदेशज शब्द सब अछि। फारसीसँ अछि आराम, अफसोस, किनारा, गिरफ्तार इत्यादि सब जे अछि फारसी शब्दसँ लेल गेल अछि तऽ ओ विदेशज शब्दमे आबि जायत। अरबीके शब्द भऽ जाइत अछि किस्मत, ख्याल, दुकान, मदद, ईसब अरबीसँ शब्दसँ लेल गेल अछि तऽ ओसब भऽ गेल विदेशज शब्द। जेना अलमारी होइत अछि पुर्तगालीके, जूता जापानी, टोपी रूसी, तऽ ओसब भऽ जाइत अछि विदेशज शब्द। हमसब देख लेलहुँ तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। आगाँ देखब हमसब रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द अछि जाहि शब्दके खण्ड कयलाक उपरान्त कोनो अर्थ नहि होइत अछि, नहि निकलैत अछि, से रूढ़ शब्द होइत अछि। रूढ़ शब्द जे अछि स्वतंत्र, रूढ़ शब्दक जे अछि स्वतंत्र अस्तित्व होइत अछि। रूढ़ शब्दक अपन स्वतंत्र अस्तित्व रहैत अछि आ ई शब्द कोनो अन्य शब्दक खण्डके मेलसँ नहि बनैत अछि। रूढ़ शब्दक अपन स्वतंत्र अस्तित्व होइत अछि आ ई कोनो अन्य शब्दक खण्डसँ नहि निर्माण कयल जाइत अछि। जाहि शब्दके, जेना अछि जाहि शब्दके खण्ड कयलाक उपरान्त कोनो अर्थ नहि निकलैत अछि से रूढ़ शब्द होइत अछि। जेना नाक, नाकमे वर्ण अछि नाकार आ क, ओहिके खण्ड करबै नाके आ क के तऽ नहि ना के कोनो सार्थक अर्थ अछि आ नहि क के अपन सार्थक अर्थ अछि। तऽ ओहिके खण्ड कयलासँ कोनो आन सार्थक अर्थ नहि निकलैत अछि तऽ भऽ जाइत अछि रूढ़ शब्द। जेना हाथ, हाथके यदि खण्ड कयल जायत वर्णके हा का आ थ के अलग अलग तऽ ओहि दुनूके सार्थक अर्थ अलग अलग नहि निकलैत अछि तब भऽ जाइत अछि रूढ़ शब्द। जाहि शब्दके खण्ड कयलाक उपरान्त जे अछि कोनो सार्थक अर्थ
नहि बहराइत अछि, नहि निकलैत अछि, तऽ भऽ जाइत अछि रूढ़ शब्द। अगिला अछि यौगिक शब्द। जाहि शब्दक निर्माण दू वा दू सँ अधिक शब्दक मेलसँ होइत अछि आ एहि शब्दक सब खंडक सार्थक अर्थ होइत अछि से यौगिक शब्द होइत अछि। यौगिक शब्द रूढ़ शब्दके एकदम विपरीत अछि, जे रूढ़ शब्द स्वतंत्र छल आ एके खंड केलाक उपरान्त कोनो सार्थक अर्थ नहि निकलैत छल, लेकिन यौगिक शब्दके जे अछि एहिमे दू या दू सँ अधिक शब्दक मेल रहैत अछि आ एके खंड केलाक उपरान्त सार्थक अर्थ होइत अछि, तैँ ई यौगिक शब्द होइत अछि। जेना एहिके उदाहरण भऽ गेल हिमालय। यौगिक शब्दक उदाहरणमे आबि जाइत अछि हिमालय। हिमालयके देखियौ हिम आ प्लस आलय। हिम माने भेल बर्फ, आलय माने घर, माने हिमालय जे अछि जाहिपर बर्फे बर्फ अछि, बर्फके घरके समान अछि, तैँ ओ भऽ गेल हिमालय। एहिके खंड केला हिम आ आलय दुनूके खंड केलाक उपरान्त सार्थक अर्थ दुनूके अपन आबि रहल अछि, तैँ भऽ गेल यौगिक शब्द। अगिला अछि उदाहरण यौगिक शब्दक विद्यालय। विद्यालयमे विद्या प्लस आलय, यानी जाहिठाम लोक विद्याके घर अछि तऽ ओ भऽ गेल विद्यालय। घुड़सवार। यौगिक शब्दक अगिला उदाहरण भऽ गेल घुड़सवार, जे इहोके खंड केलाक उपरान्त घोड़ा प्लस सवार अबै छै, तऽ घोड़ा आ सवार दुनूके अपन सार्थक अर्थ अछि। घोड़ा भऽ गेल आ सवार जे घोड़ाके सवारी करैत अछि तऽ भऽ गेल घुड़सवार। स्वदेश। यौगिक शब्दक उदाहरण भऽ गेल अगिला स्वदेश। स्व प्लस देश दुनूके खंड केलाक उपरान्त सार्थक अर्थ आबि रहल अछि, दुनूके पृथक पृथक अलग अलग, तैँ ओ भऽ गेल यौगिक शब्द। तऽ रूढ़ यौगिक देखलहुँ। अगिला देखब हमसब योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ साधारण अर्थसँ भिन्न विशेष अर्थ ग्रहण करैवला यौगिक शब्द योग रूढ़ शब्द होइत अछि। योग रूढ़ो शब्द की अछि? यौगिके शब्द रहैत अछि, मुदा एहिमे की रहैत अछि एहन यौगिक शब्द जे साधारण अर्थसँ भिन्न विशेष अर्थ व्यक्त करैत अछि आ ग्रहण करैवला यौगिक शब्द योग रूढ़ शब्द होइत अछि। तऽ योग रूढ़ शब्दमे भऽ गेल जे साधारण अर्थसँ भिन्न विशेष अर्थ ग्रहण करैवला यौगिक शब्द योग रूढ़ शब्द होइत अछि। जेना पंकज। माने पानिमे जे जन्म लैत अछि तकरा हमसब की कहै छी? कमल। पानिमे तऽ बहुत चीज जन्म लैत अछि, लेकिन पंकजसँ एकटा विशेष अर्थ आबि रहल अछि कमल। लम्बोदर। लम्ब उदर, जकर उदर माने पेट लम्बा होइत अछि तकरा हमसब की कहै छी? गणेश जी। चक्रपाणि। चक्र आओर पानि जे चक्रके ग्रहण करैवला रहै छथि तकरा हमसब की कहै छी? विष्णु। दशानन, जकरा 10टा सर होइत अछि, माथ होइत अछि, तकरा हमसब की कहै छी? दशानन, अर्थात एहिके विशेष अर्थ भऽ रहल अछि रावण। त्रिनेत्र। त्रिनेत्र जकरा 3टा आँखि होइ छनि, तऽ विशेष अर्थमे 3टा आँखिवलाके अर्थमे प्रयोग कयल जाइत अछि भगवान शिवके अर्थमे, तऽ ओ भऽ गेल योग रूढ़ शब्द। जाहिके एहन यौगिक शब्द जे अपन विशेष अर्थके व्यक्त करैत अछि तऽ ओ भऽ जाइत अछि योग रूढ़ शब्द। तऽ योग रूढ़ शब्दक उदाहरण देखलहुँ पंकज, जाहिसँ अपन विशेष अर्थ व्यक्त कऽ रहल अछि कमल। लम्बोदर, ओकर विशेष अर्थ भऽ जाइत अछि गणेश जी। चक्रपाणि, जाहिके विशेष अर्थ होइत अछि विष्णु। दशानन, रावण। त्रिनेत्र, शिव। तऽ ओहि सबके रूपमे हमसब देखलहुँ योग रूढ़ शब्द। अगिला हमसब देखब रूपान्तरण दृष्टिसँ विकारी शब्द आ अविकारी शब्द। विकारी शब्द। विकारीके अर्थ होइत अछि परिवर्तन युक्त। विकारी शब्दमे होइत अछि, विकारी शब्दक अर्थ भऽ जाइत अछि जे शब्द परिवर्तन युक्त रहैत अछि, जाहिके परिवर्तन होइत अछि। जाहि शब्दक रूप, जाहि शब्दके जे रूप रहैत अछि, जे लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदिके अनुसार बदलि जाइत अछि,
आ बदलैत रहैत अछि ताहिके विकारी शब्द कहल जाइत अछि। जाहि शब्दक रूप, लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदिक अनुसार बदलि जाइत छैक ओ विकारी शब्द होइत अछि। विकारी शब्दके सेहो 4टा भेद अछि, जेना संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। जेना हमसब इंग्लिशमे पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ने छी, नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, तऽ सएह एखन इहोमे भऽ जाइत अछि जे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। तऽ विकारी शब्दके अन्तर्गत ईसब आबि जाइत अछि। संज्ञाके जे अछि सेहो लिंग एवं बहुवचन, एकवचन, द्विवचनके अनुसार बदलै छी, कारक अनुसार बदलि दै छी। पुरुष, प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुषके अनुसार एके रूप बदलि जाइत अछि। जेना सर्वनामोके बदलि जाइत अछि आ क्रियाके सेहो एक वचन बहुवचनके अनुसार रूप बदलैत अछि, तऽ भऽ जाइत अछि विकारी शब्द। जेना विकारी शब्दके किछु उदाहरण अछि। बूढ़ा, बूढ़ा से विशेषण के भऽ गेल बुढ़ापा। दया से दयालु। चादर, श्याम भऽ गेल संज्ञा, ईसब एडजेक्टिव। तऽ ओसब भऽ जाइत अछि विकारी शब्दके अन्तर्गत। विकारी शब्दके 4 रूप अछि: संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण। तऽ अगिला भऽ गेल आब अविकारी शब्द। विकारी शब्द अविकारी शब्दक एकदम विपरीत अछि। जेना लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदिक अनुसार जाहि शब्दक रूप नहि बदलैत अछि। विकारी शब्दमे छल जाहिके रूप बदलि जाइ छल लिंग, वचन, कारक आ पुरुषके अनुसार, लेकिन अविकारी शब्दमे जे अछि लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि कोनो चीजके अनुसार जे अछि एकर रूप नहि बदलैत अछि, तऽ भऽ जाइत अछि विकारी शब्द। विकारी शब्दके सेहो 4टा भेद अछि, 4 प्रकार अछि। एहिमे भऽ जाइत अछि क्रिया विशेषण, संबंधवाचक, समुच्चयवाचक, विस्मयादि बोधक। नॉन प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब ईसब जे पढ़ने छी, एहिके आगाँ भऽ जाइत अछि एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन अछि, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एहि सबके रूपमे जे प्रयोग होइत अछि। तऽ एहिसँ आगाँ जे अछि विकारी शब्दके आगाँ उल्टा एहिके विपरीत भऽ जाइत अछि अविकारी शब्द। आ 8 गो पार्ट ऑफ स्पीच छै, तहिना इहोमे विकारी शब्द अविकारी शब्द मिलाके 8 गो ओकरो भेद अछि। अविकारी शब्दके जे लिंग, कारक, वचन, पुरुषके अनुसार रूपके परिवर्तन नहि होइत अछि। जेना इसके उदाहरण भऽ गेल एखन, कखन, कोना, कम, अधिक, शीघ्र, वाह, आह, पर अछि सेहो भऽ जाइत छै विकारी शब्द। में, हाँ, नहि, ईसब भऽ जाइत अछि अविकारी शब्दके उदाहरण। जेना शीघ्र, जल्दी, ईसब भऽ गेल अविकारी शब्दके उदाहरण। एखन, कखन, कोना, कम, अधिक, शीघ्र, वाह, आह, नहि, पर, में, हाँ, ईसब भऽ जाइत अछि अविकारी शब्दके उदाहरण। तऽ हमसब देखलहुँ आइ एहि सब वीडियोके अन्तर्गत शब्दक भेद आ शब्द प्रकरण। शब्दक भेदमे देखलहुँ शब्दक बनावटके दृष्टिसँ, उत्पत्तिके दृष्टिसँ आ रूपान्तरणके दृष्टिसँ। सबके अनुसार तत्सम तद्भव शब्दक उत्पत्तिके दृष्टिसँ छल। तत्सम तद्भव देशद विदेशद। आ बनावटक दृष्टिसँ रूढ़, यौगिक, योग रूढ़। आ रूपान्तरण दृष्टिसँ विकारी आ अविकारी शब्द। नेट परीक्षामे इहो सबसँ पूछल जाइत अछि, बहुत महत्वपूर्ण अछि इहो अध्याय। पूराके ध्यानसँ देखी आ वीडियो यदि नीक लगैत हुए RS मैथिली चैनलके लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करी। वीडियो देखबाक लेल बहुत बहुत धन्यवाद।